Hello everyone. In this video, I am going to do question number 5 of holidays homework class ninth. Prove that the bisector of angles of parallelogram enclose a rectangle. Important question. So this is a parallelogram ABCD, and these are the four angles: angle A, angle B, angle C, angle D. So angle A's bisector is this. Angle B's bisector is this. Angle D's bisector will come like this, and angle C's bisector will come like this. So this will be PQRS. P, here you can name QRS. PQRS, right? So we are to prove that this PQRS is a rectangle. So here given parallelogram ABCD in which AP, comma BQ, comma this is AP, comma BP, not BQ, BP, then CR, comma DR be the bisectors of angle A, comma angle B, comma angle C, comma angle D respectively. These are the bisectors. To prove ABCD is a rectangle, this PQRS is a rectangle. We are to prove that PQRS is a rectangle. So let's proceed. Proof. You know very well that ABCD is given a parallelogram. So if it is a parallelogram, so AB will be parallel to DC because both pairs of opposite sides are parallel and equal. And let DA be a transversal. DA be a transversal. So angle A and angle D both will be 180 degree because they are co-interior angles. Co-interior angles. Now you are given bisector of angle A also, given bisector of angle D also. So you can do it half of angle A plus half of angle D, and it is equal to half of 180 degree. अब आप क्या करो, एंगल ए का हाफ जो है उसे 1 कर दो, इसको 2 कर दो. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2, द half of 180 is what? 90 degree. Give it equation number 1. Now in the figure, here you mention angle 3 and here mention angle 4. So you will apply angle sum property by angle sum property in triangle ASD. ASD. So by applying angle sum property in triangle ASD, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. So 1 plus 2 you have found out 90 degree plus angle 3, and it is equal to 180 degree. So from here angle 3 will be equal to 180 degree minus 90 degree, and after subtraction angle 3 has come out to be 90 degree. अब फिगर में देखो 3 और 4 कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट है. सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब आप लिख दो यहां पर सिंस एंगल 3 इज 90 डिग्री, सो एंगल 4 विल ऑल्सो बी 90 degree, right? So you have proved angle 4 as 90 degree. Similarly, angle B plus angle C will also be 180 degree because they are co-interior angles. Co-interior angles. So same procedure we apply.
half of angle B plus half of angle C is equal to half of 180 degree, right? So half of B, here numbering we can give, this is 5, this is 6, this is 7, इसको आप 8 कर दो, यहां आप 9 कर दो और यहां आप 10 कर दो, राइट? सो हाफ ऑफ एंगल बी इट विल बी एंगल 5 और सी का हाफ क्या होगा 6 एंड इट इज 90 डिग्री. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल BCQ, BCQ में भी आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो. 5 + 6 + 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 5 + 6 की क्या वैल्यू है आपके पास 90 डिग्री प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री. So therefore angle 7 will become equal to 180 degree minus 90 degree. So angle 7 has come out to be 90 degree. अब 7, ये है 7 और ये है 8. तो 7 और 8 जो हैं वो कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट. तो सिंस एंगल 7 is 90 degree, so therefore angle 8 is equal to 90 डिग्री. तो जैसे आपने ये एंगल्स प्रूव कर दिए 4 और 8 90, वैसे ही आप ये एंगल 9 और 10 को भी सिमिलरली 90 कर सकते हो प्रूव. ऐसे तो आप लिख दो, सारा नहीं करना. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 9 as well as angle 10 both will be equal to 90 डिग्री. अब आपने सिंपल आंसर करना है. सिंस इन क्वाड्रिलेटरल जो बीच में ये बनी है PQRS, सिंस इन क्वाड्रिलेटरल PQRS एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच. ये चारों ही एंगल जो है वो 90 डिग्री के हो गए. देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल. PQRS is a rectangle because all the four angles are 90 degree. I hope you have understood the solution of this question. If understood clearly, comment, like and share the video and subscribe the channel to get more updates of the videos posted. Thank you.